Now we are going to start off with the next chapter, which is instrument landing system. Okay, ILS. यहाँ से आपके पूरे इसमें रेडियो नेविगेशन में थ्योरी ज़्यादा है, इसके बाद न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं है, कम है. ओके, ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम. लैंडिंग सिस्टम. इससे पहले हम लोगों ने सारे नेविगेशन एड्स जो देखे थे, before this all the navigation aids that we saw, they were all navigation aids to navigate in an en route form. This aid, this radio aid will help us perform an approach. Now what is an approach? Basically, if I have a runway, I need to orient myself with the runway first. Maybe I'm coming from Delhi to Bombay, kind of like this. So I cannot come and land to the aerodrome like this only, right? I have to first come and I have to get aligned with the runway. I have to get aligned with the runway. मुझे runway के साथ align हो. We'll wait for Vandana to join. Vandana, can you hear me now? Yeah. Okay, I'm resuming. So, what is our thing? We need to first come and we need to adjust ourselves or position ourselves in along the extended runway center line. So, let's say this is a runway. This is any runway. A runway can be facing in any direction where however it is constructed, and this is the approach path. This is the approach path to the runway. This is the approach path to the runway. जब भी हम लोग लैंड करते हैं हमारा काम होता है कि हम लोग इसके यहाँ पे अलाइन हो जाए, अप्रोच पाथ के यहाँ पर हम लोग अलाइन हो जाए. वर्क्स. एंड हम लोग यहाँ पर एक ऑल्टीट्यूड से नीचे तक डिसेंड करते हैं. दिस थिंग इज कॉल्ड एन अप्रोच. दिस थिंग इज कॉल्ड एन अप्रोच. जब भी मेरा एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए आता है, व्हाट डू वी डू फर्स्ट? Our first priority is to align ourselves with the runway's center line, and then our priority is to descend as per a glide slope. To descend as per a glide slope. An aircraft flies and he has to fly. अब एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर की तरह ऐसे तो लैंड नहीं करेगा. An aircraft won't land like this. Aircraft flies a path and then it makes a touchdown, right? So it flies a vertical path. It flies a path like this. Do you know what is the angle of this path? Do you think it is 20 degrees? No, it is a very, very shallow angle. It is a very shallow angle. It's a 3-degree glide slope. A 3-degree slope. When you start flying, you will be taught how to visually see the runway and understand whether I am flying 3 degrees or not, based on visual features, based on how the runway is looking. Okay. Now, let's say if you're surrounded by clouds, if I can see the ground, I can perform an approach. But there have been times where there are clouds and I still want to land at an aerodrome. And I cannot see the runway and still I want to land at an aerodrome. Can I land? We couldn't in the earlier times. Then we developed the system called instrument landing system, which helped us land. How much is the glide path that you follow? 3 degrees. Works. This 3-degree glide path will be very important in your 1 and 60 rule applications. So let us talk about instrument landing system. What does an instrument landing system do? It helps us to perform instrument approaches. It helps us to perform an instrument approach. अब what is an instrument approach? या approach क्या होता है? अप्रोचेस के बारे में बात करते हैं. अप्रोच मतलब रनवे के सेंटर लाइन से अलाइन हो जाना, रनवे की सीन में आ जाना. Approach can be a visual approach. Basically, what am I doing? I'm going on the downwind. I'm going, this is the runway. What am I doing? I'm going just parallel to the runway. I'm flying parallel to the runway over here. Then I'm making a turn, descending a little bit. Then I'm again looking at the runway, then again turning, and then I'm descending, and finally I do a landing. This thing is called a visual approach. This thing is called a visual approach. If I take off from the same aerodrome,
Make a turn to the left, this is called the crosswind leg. Then again make a turn to the leg, this is called the downwind leg. This again make a turn to the left, and this is called a base leg. And then again make a turn to the left, this is called the finals. This thing is called a visual circuit. This is a very important thing that you will be taught in your flying. This is called a visual circuit. A visual circuit, of course, has a visual approach. What do you mean by visual approach? You look at the outside ground features, you look at the outside visual features, and you fly using visual guidance. Using visual guidance. Okay, what do you mean by visual guidance? The runway or the PAPI lights. Do you know what PAPI lights are? Who doesn't know what PAPI lights are? I do. Who doesn't know? Hands. सबको मालूम है पापी लाइट्स क्या होती हैं? वंदना को नहीं मालूम है, अंकित को नहीं मालूम है ना? ठीक है, बता दो। बेसिकली थोड़ी लाइट्स होती है जिनको देख के मैं पता कर सकता हूँ कि भाई मैं बहुत हाई आ रहा हूँ या बहुत लो आ रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे ऐसे लैंड करना है, ये रनवे है तुम्हारा, और मैं ऐसे आना चाहता हूँ। वो लाइट बता देगी कि मेरा तुम ऐसे आ रहे हो या फिर तुम ऐसे आ रहे हो, वो मेरे को बता देती है। ठीक है। So visual approach में you have a certain ground features called the PAPI lights, precision approach path indicators का full form होता है, and you have VASIs, visual approach slope indicators. लिख लो PAPI, precision approach path indicator. Precision approach path indicator. VASIs, visual approach slope indicator. Visual approach slope indicator. Okay. So how do I take visual guidance? Visual guidance में भी हम लोग runway को देखते हैं. We look at the runway and we fly. Okay. So this is the runway, how it should look when I'm about to land. Okay, when I'm coming in for a landing. If the runway is looking like this, that means I'm very, very high. Okay. If the runway is looking like this, that means I'm coming very, very low on approach. If the runway is looking like this, that means I'm on the left hand side of the center line. If the runway is looking like this, then I'm on the right hand side of the center line. The runway should look like this. Okay, the runway should only look like this. So I'm taking visual guidance. I'm looking at the edges of the runway, you know, the perspective of the runway, and then I'm judging my approach, whether I'm high, low, up, down, left, right. Now, this was only done when you had very good visibility, when you had VFR conditions. Otherwise, you could not land and you had to divert. Now, diverting consumes a lot of fuel. Also, your passengers want to land it at Delhi. You landed them at Bhubaneswar because of a diversion. This is not applicable. This is not acceptable. So, what did we do? We developed some aids which will help us perform an approach, and that aid and that type of an approach is called an instrument approach. That type of an approach is called an instrument approach. Okay. Now, instrument approaches can be of two types. They are further subdivided into a precision approach and a non-precision approach. They are further subdivided into a precision approach and a non-precision approach. What is the difference between a precision approach and a non-precision approach?
एक प्रिसाइज एक नहीं प्रिसाइज है, नहीं ऐसा नहीं होता. Life is not that simple. In a non-precision approach, in a non-precision approach, it's about guidance. It's about guidance. Like you had a D bar in the CDI, right? आपके D bar CDI में D bar था, deviation bar. Your CDI had a deviation bar, kind of like this, which could tell you this or this or this or this. If the D bar tells you this, that means you have to go right. If the D bar tells you this, it's telling you to go left. So is this a form of guidance? Yes, it is a form of guidance. Can I use this form of guidance for an approach as well? Absolutely yes. But to the pilot, if I'm only giving, but to the pilot, if I'm only giving him left and right guidance, if I'm only guiding him, buddy, go left, buddy, go right. That means I'm guiding him in the horizontal plane. That means I'm guiding him in the horizontal plane. It's called horizontal guidance. It's called horizontal guidance. Three things. You can either call it horizontal, you can also call it lateral, sideways guidance, also known as azimuthal guidance. Basically, it is getting horizontal guidance in the horizontal plane. Okay, and it is only getting a horizontal guidance. Okay, it is only getting a horizontal guidance. About a precision approach, what is extra? It not only gets the horizontal guidance, but it also gets vertical guidance. Plus, it also gets vertical guidance. So, the deviation instrument, the D bar, you saw a D bar which was vertical and it could move like this. We also have another D bar which can tell you like this. It can tell me, okay, now I'm very, very up, I should go down. I'm very, very down, I should go up, fly down, fly up, fly down. Don't fly anywhere, maintain the correct glide path. You are on the correct path, correct? Right? So, what do we have? We have now two indicating needles. Which is guiding a pilot. Okay, buddy, if the D bar is showing you like this, that means you are a little bit low and you're a little bit to the right. That means you should go a little bit to the left and you should climb a little bit up. So you will turn the aircraft a little bit to the left and you will put the nose of the aircraft a little bit up until this thing comes in the center. Once this thing comes in the center, you will re-establish the aircraft normally. It's just like a video game, right? जहां नीडल जा रहा है वहां एयरक्राफ्ट को लेके जाओ. नीडल राइट में जा रहा है, एयरक्राफ्ट की नोज राइट में लेके जाओ. नीडल लेफ्ट में जा रहा है, एयरक्राफ्ट की नोज लेफ्ट में लेके जाओ. नीडल ऊपर जा रहा है, नीडल की नोज को एयरक्राफ्ट की नोज को ऊपर लेके जाओ एंड नीचे लेके जाओ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एनी डाउट्स? इट्स वेरी इजी, राइट? If I'm getting both the guidance, I am making a more precise approach. I can rely more on my instruments, right? So this is the difference between a precision approach and a non-precision approach. ILS is a precision approach landing system. It helps us fly a precision approach. It gives us both horizontal guidance and it both gives us vertical guidance as well. Understood? Now let us talk about the instrument landing system as a whole. The instrument landing system is a complete system. It is not one navigation aid. It is a system of navigation aids. What are the few navigation aids that
that are a part of ILS. Let's have a look. The first one is the localizer. Thereafter, we have the glide path or the glide slope. Then we have marker beacons. Lastly, we have ALS approach lighting system. So, what does an ILS help us do? It helps us fly a precision approach. Yes, What's an ALS? approach lighting system. Approach lighting system. Oh, those lights we talked about, puppies and wazis, those. These are for visual approaches. They don't have anything to do with instrument approaches. Okay. Just because इसके नाम में precision approach है, मतलब ये इसका part नहीं है. Okay. Okay. So the localizer is something that is giving us horizontal guidance. I'm drawing this arrow left and right so that it can remind you it is giving us horizontal guidance. The glide slope is something which is giving me vertical guidance. And the marker beacon is something that is giving me the distance from the threshold. Let's say this is the runway. This is the runway's touchdown zone. And it is going to give me the distance. The marker beacon is going to give me the distance. Okay? Understood? Any doubts? पक्की बात? It gives us both horizontal and vertical guidance. So imagine what is actually happening. You understood this navigation aid, understand the importance. There is clouds everywhere. It's night time. There is clouds everywhere. Okay, you cannot see the runway. You cannot see the runway. But there is a navigation aid which is allowing you to bring the aircraft on the approach path very close to the runway. How close to the runway? 200 feet above ground level. 200 feet above ground level. What does that mean? 0.7 nautical miles. How did I find this out? Have you done this in the 1 and 60 rule? कैसे करते हैं? 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप के लिए अगर मैं 1 नॉटिकल माइल जाऊंगा 300 फीट, 2 नॉटिकल माइल जाऊंगा 600 फीट, 3 नॉटिकल माइल जाऊंगा 900 फीट. फॉर एवरी नॉटिकल माइल 300 फीट, है ना? यही सीखा है 1 and 60 रूल में, सीखा है वंदना? तो 200 फीट कहां पर आएगा? 0.66 या 0.7? सोचो, देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट एड, देयर इज अ नेविगेशन एड. मेरे को बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, बट मैं ग्राउंड से सिर्फ 200 फीट ऊपर आ सकती हूँ. इतना क्लोज टू द ग्राउंड आ सकती हूँ. आई कैन बी दिस क्लोज टू द ग्राउंड, राइट, एंड स्टिल नॉट बी इन विजुअल कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. हाँ, अगर यहाँ पर मुझे विजुअल कॉन्टैक्ट मिला, आई कैन कंटिन्यू माई अप्रोच. Otherwise, I cannot continue my approach. I have to go around. I cannot proceed with the landing. Okay? Understand? Any doubts? Good. Now, this instrument landing system, इसका emission designator भी होगा. इसका emission designator alpha 8 whiskey. It's alpha 8 whiskey. Okay? So, we are going to be doing one component at a time. We are going to be doing one component at a time. किसी को कोई भी डाउट है अभी तक? बता आयुष. मेरे को है वो अल्फा 8 विस्की क्या था? एमिशन डेजिग्नेटर. आप अगेन ये वाला क्लास में नहीं थे. Okay, so next time जब पढ़ाओगे I'll study there, I guess.
आपको रेडियो नेविगेशन का मैंने प्लेलिस्ट भेजा था? मा- भेज दूंगा। मेरे को आज क्लास के बाद एक बार याद करा देना प्लीज। यस आकाश। एएलएस में क्या यूज होता है, जैसे मार्कर, बीकन, अप्रोच डिस्टेंस, लाइटिंग लाइट्स? सिस्टम भाई, जब तो लैंड करने आता है वीडियो देखिए, रील भी देखिए, ऐसे सुंदर सुंदर लाइटें रहती है रनवे पे। ओके, तो वो विजुअल अप्रोच हो गया ना फिर वो तो। वो अप्रोच लाइटिंग सिस्टम कहते हैं, वो लाइटों का नाम ही अप्रोच लाइटिंग सिस्टम है। ओके ओके। Works. What I want you to do right now is go to TR radio navigation notes, read page number 51 and 52. Just read it. Just read it. I'll be back in a minute. Okay, so now did you read it? Did you read it? Great. I didn't. I don't have the PDF, the page. Someone resend it in the group, please. Any which ways, I'll continue. Okay? Chill out. It's okay. So, the localizer, the first navigation aid that we are going to study, the component which gives us horizontal guidance, the localizer. So the localizer, firstly, we are going to study what frequency does it operate on. Instead, in fact, we have studied about the localizer's frequency band, have we? Does anyone remember? Does anyone remember? 108 decimal 0 to 111 decimal 905 megahertz. Remember the VOR frequency band? It used to share with the VOR frequency band. Every frequency after the decimal place, if the digit is an odd digit, basically like 1 or 3, 5, 7, or 9, it has to be a localizer frequency. So, as a result, as explained in the VOR chapter, in every 1 megahertz, we have 20 channels available. So, within these 4 megahertz, we have 80 channels available. Out of these 80 channels, half of the channels are for the VOR and the other half are for the ILS. So, how many channels do we have available? We have 40 channels available. When I say 40 channels, means 40 separate discrete frequencies, unique frequencies available. Okay, Sriram, videos on please. Okay, great. So we were talking about the emission designator. Regarding the emission designator, it stands for Alpha 8 Whiskey. Alpha means double sideband and amplitude modulation. 8 means it has both analog information and it has digital information. And there's not one channel, there can be multi channels, multiple channels, multi channels, analog plus digital signals. 8 means that. Whiskey means it's a composite system. Why is it a composite system? Because are we measuring something? We are measuring our deviation from the center line. From a very far off distance, it comes under telemetry. Are we also being able to hear the ident of the navigation aid? We were able to hear the ident of the NDV, two-letter ident. We were able to hear the ident of the VOR, a three-letter ident. Similarly, the ILS also has an identifier. Every navigation aid has its own name. इसका आइडेंट सुनने के लिए मुझे टेलीग्राफी करनी पड़ेगी. टेलीमेट्री है, टेलीग्राफी है, right? So it's a composite of two systems. Yes, Ankit, tell me. 8. Uh, what is 7? What is 8?
Then what is it? Maybe I can be wrong. We'll have a look. I think 9 is composite system. 9 is composite. There's no harm in checking it, right? Let's have a look. But 8 contains only analog information. As per the chart, 8 contains analog information only and not digital system. Okay, thank you for correcting me, Ankit. 9 means composite system of analog plus digital. Okay, good. Okay, let's start. And what does it help us do? It gives us lateral navigation, or it gives us lateral guidance along the approach path of the runway. So how does it work? Let's say I take a runway. Let's say I take a runway. Okay, some takeoffs and landings are happening in this direction. Takeoff and landing are happening in this direction. So if I'm landing, I'll land here. If I'm taking off, I will take off here. So does everyone know what a visual circuit is? Have you been taught what a visual circuit is? Raise your hands. If not, tell me. Okay, you haven't been taught what a visual circuit is. So a visual circuit is a pattern that we follow around a runway to for the purpose of practicing approaches and landings. Okay, and by looking at the visual ground aid, which is nothing but the runway. What do you do in a visual circuit? You take off, you climb to a certain altitude, and that altitude basically you climb 1,000 feet, 1,000 feet. You take a left turn and fly for about a few seconds, I would say. Okay, and then again turn left. This particular line where you are taking off and going to 1,000 feet above ground level, this is called the upwind. This thing you're going left, so this is called the crosswind. This thing is called the downwind. Okay, this thing is called the base, and this thing is called the finals. The finals means finally I'm about to land, right? So these are the 5 different legs of a visual approach. Now the question is, why do I call the upwind and the downwind? What is so windy about it? So the windiness about it, you must have heard that we always take off into the wind. We always take off into the wind. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, रनवे में जब हवा आ रही है, आजू बाजू हवा तो चल ही रही होगी, है ना? अगर विंड आ रही है इस दिशा से, अगर विंड, if the wind is coming from this direction, I should take off against the wind. मतलब if the wind is coming from here, I should take off from where the wind is coming. I should go against the wind. I should fly against the wind for the purpose of takeoff. Now, Vandana will think, why? Why should I do this, Vandana? Vandana has a doubt. The reason is to give you more lift, to give you more true air speed. Imagine you are standing on the runway, but सामने से करीबन 20 नॉट्स की विंड आ रही है, 10 नॉट की विंड आ रही है, करीबन 20 नॉट की विंड आ रही है, 10 नॉट की विंड आ रही है. आपका एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है 0 की स्पीड से, लेकिन अगर आप एयरक्राफ्ट के बाहर हाथ डालोगे तो आपको हवा आएगी सामने से 10 या 20 नॉट की. बहुत अच्छी बात है. मैं खड़ा हूँ तब भी मेरे विंग के ऊपर एयर फ्लो है, तब भी मेरे को लिफ्ट मिल सकती है.
right? Vandana, can you hear me? Yeah, I can hear you. There was a power cut. कोई बात नहीं. So यहाँ पे अब अगर मेरे सामने से हवा आ रही है एंड मेरा एयरक्राफ्ट वहीं पे खड़ा हुआ है, even though my aircraft is standing on the ground, my ground speed is 0, मेरे ऊपर हवा आ रही है एंड मेरे को 20 नॉट की हवा सामने से लग रही है. My true air speed is 20 knots, क्योंकि हवा तो सामने से आ रही है बट मैं चल नहीं रहा. सो व्हेन आई टेक ऑफ, अगर मैं 30 नॉट्स की भी मेरी ग्राउंड स्पीड हुई, मैं 30 नॉट से आगे जा रहा हूँ, तो मेरे मोशन की वजह से मेरे को 30 नॉट्स की हवा लगेगी, प्लस हवा तो और 20 नॉट की आ ही रही है. सो व्हेन आई एम स्टैंडिंग एट जीरो स्पीड, आई एम गेटिंग अ airflow of 20 because of winds. Now if I fly, if I'm on the ground, if I'm at a speed of 20, 30 knots, I'm getting over my wings a speed of 50 knots. So cool, right? So I can take off earlier. That is the reason why we always take off into the wind. अब आपने पानी के बारे में तो जाना ही होगा. पानी अगर यहाँ से यहाँ बह रहा है, तो this thing is called the upstream. This, if I'm going in this direction, that means I'm going up the stream. पानी नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, I'm going upstream the river. I'm going upstream the river. या अगर मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, that means I'm going downstream the river. So that is the reason here there is no stream. This will be called the upwind and here will be called the downwind. Any doubts? Sriram, what you have asked me, I'll tell it to you after class, okay? Any doubts over here? So we always take off into the wind. Why did I teach you this? Because I wanted to teach you the placement of the antenna. Because I wanted to teach you the placement of the antenna. The runway has two ends, and each end of the runway is called the threshold. You will learn this in regulations. Each end of the runway is called the threshold. Each end of the runway is called the runway threshold. इस रनवे थ्रेशोल्ड के इस पार मैंने एंटीनाज लगाए. कहाँ पे लगाए एंटीनाज? ऑन द अपविंड एंड ऑफ द रनवे. यहाँ से इधर, ये जो है ना, इससे 200 मीटर या 200 फीट, ठीक है, 300 मीटर, 200 से 300 मीटर, यहाँ से 200 से 300 मीटर में आगे गया ग्राउंड पे, और यहाँ पे मैंने एंटीनाज लगा दिए बहुत सारे, इस डायरेक्शन में फेस करते हैं. तो लोकलाइजर का जो एंटीना होता है कहाँ प्लेस होता है? वेयर इज द लोकलाइजर एंटीना प्लेस? इट्स प्लेस्ड हियर. इट इज लोकेटेड ऑन द अपविंड एंड ऑफ द रनवे एंड इट इज centered on the center line. This is the runway center line, right? This is the center line. अगर मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन बना दूं वंदना, तो ये एक्सटेंडेड रनवे सेंटर लाइन होगी. ये एक्सटेंडेड रनवे सेंटर लाइन होगी. इट इज लोकेटेड ऑन द extended runway center line 200 से 300 मीटर from the touchdown zone. Okay, what does a localizer antenna look like? Please check your groups. I'm sending it. Check your groups, please. Now, these are the close-up for the antenna. Now, I want you to look at the antennas over here.
Look at this. The last image that I have sent in the group. This one. This last image that I have sent you in the group. So, here the aircraft is landing in this direction. The localizer antenna that is placed, this is not being used. This localizer antenna will be used for landings from the opposite direction. ये जहाज तो इस direction से land किया ना, opposite runway भी तो होगा. अगर कोई उस side से, if someone comes from that side, that is when he will use this antenna. The aircraft that is landing right now, he did not use this antennas. There, on the other end of the runway, there will be other such antennas. He's using those antennas. Okay. Now, if you closely notice over here, I have told you about directivity. These are all directional antennas. So they are transmitting radio waves as a lobe in a one particular direction. They are not transmitting it omnidirectionally. It's the energy is being directed, and they are transmitting radio waves in the form of a lobe. They are transmitting radio waves in the form of a lobe, not one lobe, two lobes. As I've told you, it's analog information, multi-channel analog information. So the two channels that we have are this. So this localizer antenna is transmitting two lobes. One of those lobes, I'll just reduce the size of this thing. Okay, so the antenna is transmitting a lobe left of the center line, one lobe to the left of the center line, and he's transmitting another lobe on the right hand side of the center line. Two lobes. Any doubts? Any doubts? No doubts? The lobes are transmitted such that these lobes are overlapping along the center line path, and this portion is called the equisignal. So how does this work? The localizer antenna is transmitting two lobes. Now the left lobe is modulated by a 90 hertz signal. So the localizer antenna will have a frequency, let's say 109.9 megahertz. Is this a localizer frequency or a VR frequency? This is a Localizer, sir. Why? Because this is 9 over here, right? So carrier frequency to ye hai. This is the carrier frequency. The radio wave that is coming over here, the beam that is over here, the lobe that is here, it is on 109.9, but it is being modulated by a 90 hertz modulating signal. Works. The right lobe is not the same, it's different. It is modulated by 150 hertz signal. So it's different. Now, these radio waves, these are two overlapping waves, two overlapping sectors. So this is called the 90 hertz one is called the yellow sector. It's just a color convention for the purpose of diagrams. And the right one, 150 hertz, is also called the blue sector. Okay, how does it work? The principle of operation. The principle of operation, write down the principle, difference in depth of modulation.
Okay. We'll wait for Vandana to rejoin. I'll just call her up. वंदना आ जाओ. अच्छा, नहीं, यहाँ से आप एग्जिट कर चुके हो वंदना. एक बार वापस बंद करो उसको और वापस रीजॉइन करो. यहाँ से आप निकल चुके हो. हेलो. 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 वंदना रीजॉइन. ओके. Vandana, can you hear me? Vandana, can you hear me? Yeah, I can hear. Okay, great. So there are two sectors. आपने ये देख लिया. There are two sectors, right? Now, the principle of operation is difference in depth of modulation. How does this work? What are we doing? Let's say I have an aircraft over here. And this aircraft, on the aircraft, we have a antenna which is receiving these waves. Okay, these transmissions, I'll just tell you, it's not written in the notes. Put up a separate point. Okay, no, it's there in the notes. You saw the antennas were horizontal in line. That the antennas, the image that I showed you, the images of the antennas are horizontal. Yes. The polarity of the radio waves, they are sending horizontally polarized radio waves. Okay. So the navigation antenna on board the aircraft also has to be horizontal. Sriram, the same thing that I was, actually you weren't there in the RT class. Any navigation antenna that is there in your aircraft is a excuse me, horizontal antenna. Okay. Now the question is, how is the localizer giving me horizontal guidance? Let's see. Yes, But the VHF antenna is vertical, right? that is the VHF comms antenna. Okay. Anything communication is a vertical antenna, anything navigation is horizontal antenna. So VDF is exceptional, right? VDF and NDB are exceptions. Okay, and to some extent, the airborne with the radar is also exceptional. But at that point of time, we don't actually care about the polarity. Okay, now let's say I have this aircraft. If my aircraft, okay, I'm in clouds, I can't see anything. My aircraft cannot see anything. I don't have anything. Now, if my aircraft is on the left hand side, am I receiving more of 90 hertz signal? More of the 90 hertz modulated signal. Is the 90 hertz modulated signal more deep? Yes. More of 90 hertz signal has been induced in my antenna. Now, is less of 150 hertz signal modulate or the signal of 150 hertz modulation that I'm receiving, is it less deep? Yes. I'm receiving less of the right sector signal or less of the 150 hertz signal. What does my onboard aircraft do? I measure the depth of modulation of the 90 hertz and I compare it with the depth of modulation of 150 hertz. If the 90 hertz modulation is higher or more deep or more stronger, that means I'm on the left hand side.
If I happen to receive more of 150 hertz signal, my equipment is sensing more of 150 hertz signal and less of 90 hertz signal, that means the equipment knows that I am on the right hand side of the center line. If I'm receiving equal amount of modulation, that means I'm bang on the center line. I'm bang on the center line. मैं रनवे की सीध पे हूँ. I'm right on the extended runway center line. I'm nose to nose. Right? How are the indications shown to the pilot? The indications that are shown to the pilot are on a CDI, also known as a course deviation indicator. Okay, similar to the CDI in VOR, here it is the same. You have selected the course of ILS on top. Now, this you don't have to set it up. This is not, you do not require to set the course of the ILS. VOR may you had to set the course, right? Vandana, can you hear me? Yeah, I can hear you. Please turn your videos on. VOR में मुझे कोर्स सेट करने की जरूरत पड़ती थी. यहाँ पर is my indications dependent on what radial am I getting? No. Is my indications dependent on magnetic north? No. It is simply dependent on the difference in depth of modulation and nothing else. So no matter whatever course I select overhead, it does not matter. Does not matter whatever course I select. This will always give me correct sensing. ILS will always give me correct sensing. So now, if my aircraft senses more of 90 hertz signal, he will put the needle to the left or to the right. Which one? Tell me. Right. Question है, अगर मेरा needle So मेरा right. senses more of 90 hertz modulated signal, will the needle be going left or right? Then exactly, right. tell me fly right. So, and if my aircraft is sensing more of 150 hertz signal, that means the needle will tell me to go left. Correct? Am I getting guided? I don't have anything to look at outside. It's a completely cloudy, pitch dark. But yet I am guided by this small little needle and I can fly the aircraft very well with this. And it is, the indications are a little bit more precise than the VOR signals. This localizer is more precise than a VOR because in a VOR, one full scale deflection was how many degrees? 10 degrees. 10 degrees, everyone agrees? Yes, but here the full scale deflection, full scale means needle is at the extremity. The full scale deflection is 2.5 degrees only. That means if this is the runway and if this is the runway and this is the extended runway center line, I have to be just 2.5 degrees. Just 2.5 degrees left or right, and I will be on the edge of the CDI. It is so sensitive. So can I say that the localizer is more sensitive and more accurate of a navigation aid? The answer is yes. The answer is yes. Any doubts? Yes, Akash. तो इन रियल लाइफ में हम कोर्स डालते हैं कि आईएलएस डालते हैं सीडीआई में? Say again. इन रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम लेंगे तो हम सीडीआई में कोर्स डालते हैं कि आईएलएस डालते हैं? Okay.
अब आपने क्या किया, अभी आपने आप VOR की मदद से नेविगेट कर रहे थे, अब आप अप्रोच फेज में आ चुके हैं, आप लैंड करना चाहते हैं। आपने ILS की फ्रीक्वेंसी, मतलब जो लोकलाइजर की फ्रीक्वेंसी होती है, वो आपने अपने रेडियोज में ट्यून कर दी। अब आपका CDI जो इनपुट शो करेगा वो लोकलाइजर की इंडिकेशन से शो करेगा, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर आपको ऊपर आप कुछ भी नहीं डालोगे, जो लास्ट रखोगे चलेगा, बिकॉज ये जो डी बार है वो डी बार तो भाई DDM से ही चलेगा ना, डिफरेंस इन डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन से ही चलेगा, राइट। बट यस, इट इज गुड एयरमैनशिप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लैंड कर रहे हैं कुछ इस दिशा में, आप इस दिशा में लैंड कर रहे हैं, तो आपका कोर्स 045 होगा, फाइनल अप्रोच कोर्स। इस डायरेक्शन को कहते हैं फाइनल अप्रोच कोर्स। अगर मैं ऐसे लैंड कर रहा हूँ तो मेरा फाइनल अप्रोच कोर्स 000। मैं चाहता हूँ कि मैं वो यहाँ रखूँ। ये लैंडिंग के टाइम पे काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आता, ये गो अराउंड के टाइम पे काम। यहाँ पर हम लोग कोर्स 000 डालते हैं क्योंकि गो अराउंड के टाइम पे काम, ठीक है। I'll tell you why. Let's say the aircraft is over here. अब तुमने एक CDI में कोई भी कोर्स डाल दिया, कोई भी कोर्स डाल दिया, लेकिन तुम्हारा एयरक्राफ्ट लेफ्ट में, डी बार तो तभी भी राइट में ही दिखाएगा ना, चाहे तुम कोई भी कोर्स डालो। समझ रहे हो, कोई दिक्कत? as long as you're flying in this direction, as long as you're flying to the runway, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हाँ उल्टा दिशा में जाओगे तो दिक्कत आएगी, उसको बैक कोर्स ILS कहते हैं। ओके, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? तो अगर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन 2.5 है तो मतलब 1 डॉट कितना होगा? 0.5. 1 dot is 0.5 degrees of deflection. Any doubts? No doubts. This was the working of the localizer. Okay? Take a small break. 5 minutes. Okay, great. So now that we have actually done all the indications, we will move on to final aspects of having a localizer. We are going to move to final aspects of having a localizer. जैसे एक VOR में एक मॉनिटरिंग स्टेशन होता है, जैसे एक VOR में मॉनिटरिंग स्टेशन होता है, वैसे ही एक ILS में भी ऑन ग्राउंड मॉनिटरिंग स्टेशन होता है। ये ऑन ग्राउंड मॉनिटरिंग स्टेशन क्या करता है? VOR के केस में क्या करता था? अगर VOR का रेडियल इज डेविएटिंग बाय एटलीस्ट 1 डिग्री, शट डाउन कर देगा, करेक्ट। तो हमारा थ्रेशोल्ड क्या था? हमारा थ्रेशोल्ड था 1 डिग्री ऑफ चेंज इन दिस थिंग, राइट। नाउ what am I supposed to do? My on ground monitoring station will see if this is my, let's say, my localizer, ठीक है। अब ये लोकलाइजर की जो बीम होनी चाहिए, जो इक्वी सिग्नल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इक्वी सिग्नल होना चाहिए। दिस शुड बी अलोंग द रनवे सेंटर लाइन, दिस शुड बी अलोंग द रनवे सेंटर लाइन। बट अगर ये रनवे सेंटर लाइन से, इवन अगर ये रनवे सेंटर लाइन से, मान लो ये आपकी रेड वाली रनवे सेंटर लाइन है और ब्लैक वाली आपकी लोकलाइजर की बीम है, अगर ये रनवे सेंटर लाइन से 35 फीट डेविएट कर देगा तो वो बंद कर देगा उसको, ठीक है। कूल, 35 feet is the threshold. Now, not only this, on the aircraft, there are several different types of ILSs. There are several different types of ILSs. उनकी कैटेगरीज होती है प्रिसिशन के बेसिस पे। तो बस ये जो वैल्यूज बता रहा हूँ ये याद रख लेना। रिगार्डिंग द मॉनिटरिंग ऑफ द स्टेशन, रिगार्डिंग द मॉनिटरिंग ऑफ द लोकलाइजर, अगर लोकलाइजर की जो बीम है वो 35 फीट से ज्यादा डेविएट करे, देन उसको बंद कर दिया जाएगा,
ठीक है, you have an on ground monitoring station on site, greater than 35 का error shut, but this is only for cat 1 ILS system, category 1 ILS systems. Category 2 is more precise, category 3 is even more precise. Category 1 is more precise, category 3 is even more precise. ठीक है, 1 then more precise than 2 then 3. ओके, 3 के अंदर भी और सब पार्ट्स हैं जो हम लोग आगे फ्यूचर में आके देखेंगे। तो 2 वाला तो ज्यादा प्रिसाइज है, तो उसके लिए इन लोगों ने जो थ्रेशोल्ड है वो ज्यादा कर दिया, बढ़ा दिया। यार अगर तुम 35 फीट के हो एंड तुमने 35 फीट की डेविएशन दे दी, सॉरी, कैट 2 के लिए 25 फीट की डेविएशन दे दी, तुमको शट कर दिया जाएगा। लास्टली अगर कैट 3 सिस्टम है, then it is yes, absolutely correct. Okay, great, cool. अब VOR का आपने आइडेंटिफायर सुना था, सीखा था, चलो याद करो एनडीबी का आइडेंटिफायर कैसा होता था। इट वाज अ 2 लेटर थिंग, किलो अल्फा KA DP डेल्टा पापा, राइट। यहाँ पर VOR में कैसा हम लोगों ने देखा था, इट वाज अ 3 लेटर आइडेंटिफायर DPN डेल्टा पापा नवंबर, राइट। ये हम लोगों ने देखा हुआ है, वी हैव लर्न दिस। ILS में इट्स अ 4 लेटर थिंग, ILS में इट इज अ 4 लेटर थिंग, और जो पहला लेटर होगा वो हमेशा I होगा। कोलकाता में I कैब, ओके। आइडेंटिफायर VOR जब ट्रांसमिट करता है उसमें अपना नाम भी मॉर्स कोड में ट्रांसमिट करता है, ILS भी करेगा। यू कैन, इफ यू प्रेस अ सर्टेन बटन इन द कॉकपिट यू कैन हियर द आइडेंटिफायर। आपने फ्रीक्वेंसी ट्यून की, आप ट्यून करके ये पता कर सकते हैं मैंने फ्रीक्वेंसी तो सही ट्यून की, क्या मुझे उसके एक्चुअली सिग्नल्स मिल रहे हैं, क्या ये वही है, क्या ये वही है, कहीं वही फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने वाला कोई दूसरा नाविक तो नहीं है। ठीक है, कूल। Excuse me, टेल मी। sorry to interrupt. ये जो identifier है, you'd have to also learn Morse code for that. As per DGCA regulations, you have to learn Morse code, but no one actually learns Morse code in today's world because you have appropriate systems available जिसमें आपको Morse code decode करके दे ही देता है, right? So for examination purposes also you'd have to learn Morse code. No, you don't have to learn Morse code for DGCA exams, nor even for your CPL. ठीक But है? airline prep and all. Nothing. For the purpose of issue of CPL on books, on the DGCA documents for the requirements of a CPL, you should be proficient in receiving Morse code, but उसका सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाता है, ये लो तुमको आता है, ठीक है। Okay, okay. सिखाया नहीं जाएगा Morse code. You don't have to memorize the Morse code also. हाँ, you should know how do you decipher it. अगर आपके पास एक रेफरेंस टेबल है, आपको याद कुछ नहीं करना। आप अगर डैश डॉट देखोगे और देखोगे हाँ डैश डॉट स्टैंड्स फॉर अल्फा, तो ठीक है, गुड, इतना तो कोई भी कर सकता है, राइट। करेक्ट आयुष? Yeah. Got it. Good. Yeah. Okay, great. Now the ILS localizer transmits the ident. The ILS localizer transmits the ident, and in this particular ident you have a 3-letter code which has a prefix of the letter I. अब ये आपकी ILS है, ये कितने बार अपना आइडेंट ट्रांसमिट करेगी? हाउ मेनी टाइम्स डज इट ट्रांसमिट द आइडेंट? द आइडेंट इज ट्रांसमिटेड 7 times in a minute. The ident is transmitted 7 times in a minute. So let's say this is the carrier wave and you're putting the ident kind of like this. So some modulating wave would have come and he would have put this ident, right? As I told you, there was a radio frequency, there was an audio frequency. The radio frequency is 109.9, which is the frequency of the ILS localizer, which is the frequency of the ILS localizer. अब जब आपको इसमें आइडेंट डालना था, तो आपको ऑडियो फ्रीक्वेंसी तो कुछ चाहिए, तो यहाँ पर इन लोगों ने ऑडियो फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी है 1030, करेक्शन
1020 हर्ट्ज एक फ्रीक्वेंसी आएगी इस ऑडियो वेव की, उसमें अपना आइडेंट चिपका के चली जाएगी। अगर आपको कोई भी नेविगेशन एड का आइडेंट नहीं मिल रहा है, मींस व्हाट, it is unserviceable or it is under maintenance. If the ident, make a note again, write it down. Note, if there is no ident or you listen to a continuous tone, आपको कुछ या तो आइडेंट नहीं सुनाई दे रहे हैं या तो आपको बीप आइडेंट सुनाई दे रहा है, जस्ट दैट। ऐसे केसेस में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अनसर्विसेबल और अंडर मेंटेनेंस। It is unserviceable or under maintenance. Understood? Any doubts? No? Okay. अब हम लोग इसकी कवरेज करेंगे। अब ये एक नेविगेशन एड है, इस नेविगेशन एड की, लेट्स से आई एम द लोकलाइजर एंड आई एम ट्रांसमिटिंग अ बीम, इस नेविगेशन एड की लेटरल कवरेज होगी, लेटरल कवरेज की लिमिट्स होगी, इस नेविगेशन एड की वर्टिकल कवरेज की भी लिमिट्स होगी। Similarly, when we will be doing the second navigation aid in the ILS system, the glide slope, उसकी भी lateral coverage होगी, उसकी भी vertical coverage होगी, और दोनों हमें अलग अलग याद रखनी है। Okay? Cool. आकाश, tell me. सर आपने वीडियो शट डाउन किया है, ऑफ किया है वीडियो? नहीं, एक सेकंड में रिजॉइन करता हूँ। आप मेरे को पहले देख पा रहे थे? आकाश? 3 मिनट पहले देख पा रहा था, अभी नहीं देख पा रहा हूँ। नहीं यार, मैंने वीडियो शट डाउन नहीं किया। एक बार आप मेरे को पिन कर दो, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पिन कर देता हूँ for everyone and check if you can see me now. यस आई कैन सी यू नाउ। Okay? तो जब आप किसी भी को भी पिन कर देते हो, प्रेफरेबली उसकी वीडियो दिखाएगी। अगर आपका नेटवर्क थोड़ा ऑफ चल रहा है तो प्रेफरेंस उसकी वीडियो को दी जाएगी। ठीक है? ओके आकाश? सो आई जस्ट अगेन एक्सप्लेन। आपके पास लेट्स से एक लोकलाइजर है, लोकलाइजर के नाविट की भी एक लेटरल कवरेज होगी, लोकलाइजर की भी एक वर्टिकल कवरेज होगी। सिमिलरली हम ग्लाइड स्लोप पढ़ेंगे, ग्लाइड स्लोप की भी एक लेटरल कवरेज होगी, ग्लाइड स्लोप की भी एक वर्टिकल कवरेज होगी। आ जाओ इसकी लेटरल कवरेज एंड वर्टिकल कवरेज को समझते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द कवरेज, this is again what kind of coverage? This is the DOC, the designated operational coverage. What is the designated operational coverage? कि इस एरिया के अंदर जो मैं सिग्नल्स दूंगा ये एक्यूरेट होंगे एंड आपको सिग्नल रिसेप्शन की गारंटी है कि मेरे ही सिग्नल मिलेंगे, कोई आजू बाजू के चीजों से इंटरफेरेंस आपको नहीं मिलेगी। अगर इसके बाहर जाओगे सिग्नल मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, शायद मिले शायद ना मिले। अगर मिलेगा तो गारंटी है कि वो सही होगा? क्या उसमें गारंटी है कि वो सही हो? पता नहीं, यू नेवर नो, राइट? वंस अगेन, ग्रेट, लेट्स रिज्यूम। सो अब हम लोग बात करेंगे कवरेज एरिया के बारे में। मान लो यहाँ पर आपका लोकलाइजर है, मान लो यहाँ पर आपका लोकलाइजर है, यहाँ कहीं पे आपका रनवे है। तो इन्होंने बोला कि यार जितना दूर जाओगे उतनी तो आपकी रेंज कम होनी चाहिए ना, उतनी तो आपकी अलाउड रेंज कम होनी चाहिए, राइट? So they told that till the area, till the distance of 17 nautical miles, मैं गारंटी करता हूं आपको, you will be getting coverage 35 degrees either side of the extended runway center line. 35 degrees, आप 17 nautical mile दूर जाओ, आपको सेंटर लाइन से 35 degrees here, 35 degrees here आपको कवरेज मिलेगी। अगर आप इसके बाहर हो आपको सिग्नल मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। क्या सिग्नल मिलेगा? साइड बैंड्स मिलेंगे, साइड बैंड्स या फिर साइड लोब्स, करेक्शन, नॉट साइड बैंड, साइड लोब्स मिलेंगे। साइड लोब्स विल नेवर गिव यू द करेक्ट सिग्नल। 35 डिग्री की 35 फीट? डिग्रीज buddy, डिग्रीज, इट्स एन एंगल, राइट? तो इट्स वो एन एंगल। 35 फीट लास्ट टाइम पे क्या लिखा था वो लोकलाइजर का?
वो डेविएशन ऑफ द इंडिकेशंस था, वो डेविएशन ऑफ द इंडिकेशंस था। वो बोला गया था कि मान लो ये तुम्हारा सेक्टर है और ये तुम्हारा ब्लू सेक्टर है। मान लो तुमने एक दिन तुम्हारा एंटीना कुछ खराब खराब हुआ और ये ब्लू सेक्टर थोड़ा इधर डाइवर्ज हो गया। एंगुलर चेंज नहीं है, लिनियर चेंज है। ठीक है, ये कवरेज एरिया डीओसी, जैसे उसमें डीओसी की बताई जाती है, इसमें ये इसका डीओसी। कूल। अब अगर आप यहाँ से 25 नॉटिकल माइल्स दूर जाओ, देखो 17 के बियॉन्ड आपको 35 डिग्री की कवरेज नहीं मिलेगी। 35 से, सॉरी 17 के बियॉन्ड जाओगे 35 से कम कवरेज मिलेगी। कितने की कवरेज मिलेगी? 10 की कवरेज मिलेगी। 10 इधर 10 उधर। ठीक है जी। 1735 एंड 1025। अब इसकी वर्टिकल कवरेज की बात करूं, इसकी वर्टिकल कवरेज की बात करूं। चलो देखो जी, इस एंटीना को हम लोगों ने इसको टॉप डाउन देखा, तब जाके मुझे इसकी लेटरल कवरेज मिली। अब अगर मैं इसको साइडवेज देखूंगा, मैं इसकी वर्टिकल कवरेज ड्रॉ करा के आपको दिखा पाऊंगा। इसकी वर्टिकल कवरेज जो है, इट इज फ्रॉम -1 डिग्रीज ऑफ द होराइजन टू +7 डिग्रीज ऑफ द होराइजन। फ्रॉम वेयर? ऑफ द होराइजन। अब आप बोलोगे -1 डिग्रीज क्यों? बहुत सी बात है, नहीं होना चाहिए -1 डिग्रीज, बट दिया गया है। ठीक है, कवरेज एरिया। कूल। एनी डाउट्स? अब अगर आप 10 नॉटिकल माइल तक हो, इधर लेटरल कवरेज पे भी जाओ, अगर आप 10 नॉटिकल माइल तक हो, आपको 35 डिग्री से भी बियॉन्ड कवरेज मिल सकती है। दिस इज समटाइम्स आस्क्ड इन एग्जाम, समटाइम्स, बहुत रेयर है, बट ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। या टेल मी श्रीराम। 17 and 25 are nautical miles, right? Yes, these are nautical miles. These are distances. Yes, you see, these are distances from where? Distances from the Threshold. antennas. ठीक है? What will happen outside this coverage area? You may receive false indications. Why will you receive false indications? Because let's say this is a lobe, right? हम लोगों ने देखा इसके side lobes भी होते हैं, right? Because of these side lobes, you may receive false indications. Understood? Farhad, where were you? भैया एक काम में अटक गया था हम। Okay. Any doubts here? No? Cool. We'll be doing glide path. I want you to open my notes right now and go to page 53 and 54. Read those 2 pages. Read those 2 pages. Come on. 53, 54. Guys, I'm unpinning my screen, huh? I am unpinning my screen. I want everyone to pin my display, me, my video, and I want everyone to pin the screen. पिन का वहां पे एक आइकन आएगा। पेजेस पढ़े? Okay, let's start with the glide slope.
So again, let's go back to the ILS part. And if you look over here, this localizer is giving me the horizontal guidance. Have you successfully understood how do I get the horizontal guidance? I hope yes. Now today we are going to do the glide slope. If you have understood the localizer, you by default know the glide slope. It is the same thing. Instead of sending lobes left and right, we are sending lobes up and down, and it's the same thing. It is the same thing. Okay, let's see how. सेम तरीके से हम लोग पढ़ेंगे जैसे हम लोगों ने लोकलाइजर पढ़ा था. You have the ILS glide path. So, what is the frequency that it operates on? The frequency band that it operates on is 329.15 to 335 megahertz. How many channels are available? Again, 40 channels are available. Why are 40 channels available? I'll tell you in a brief moment. अब ये जो सारी frequencies हैं ये कौन से बैंड में आती है? ये UHF बैंड में आती है. They all come in the UHF band. Okay. ILS एंटीना की लोकलाइजर वाली जो एंटीना थी उसकी लोकेशन क्या थी? Akash, what was the location of the localizer antenna? 300 meters from runway. Where? From runway. अरे फ्रॉम रनवे कहाँ पे? इतना बड़ा रनवे होता है यहाँ पे 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 On हर एक center line. ऑन From सेंटर center लाइन line. 300 meters ऑन सेंटर लाइन ऑन एक्सटेंडेड सेंटर लाइन. तो वो यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है. राइट. Right. दोनों साइड होगा ना. दोनों साइड होगा. नहीं, मान ले एक साइड पहाड़ है. अब जहाँ से लैंड करते हैं उसके अपोजिट साइड से होगा. यस, उसको कहते हैं अपविंड एंड. 3 points upwind end of the runway on the extended runway center line 300 meters from the threshold. Okay, any doubts? अब let's say मैं आपको वापस एक और रनवे देता हूं. ये रनवे पे अगेन ये क्या हुई? ये थ्रेशोल्ड हुई आपकी. ये आपकी थ्रेशोल्ड मार्किंग्स होगी. दिस लाइन इज द थ्रेशोल्ड, द एंड ऑफ द रनवे, and these markings are called the threshold markings. They mark the end of the runway. Okay, यहां से यहाँ पर एक एरिया होता है जिसे हम लोग कहते हैं टच डाउन जोन. यहाँ पर एक एरिया होता है जिसे हम लोग कहते हैं टच डाउन जोन. ओके, यहाँ पे टच डाउन जोन के बाजू में इसको लगाया जाता है. टच डाउन जोन कहाँ पे होता है? यहाँ से कुछ 300 मीटर आगे. 300 मीटर आगे कुछ टच डाउन जोन होता है. एंड टच डाउन जोन के अलोंग लगाया जाता है. किसके अलोंग लगाया जाता है? ये जो टच डाउन जोन है यहाँ पे, इसके अलोंग मतलब इसके बाजू में. इसके बाजू में ये जो रनवे की जो एज है, ये वाला क्या लाइन है? ये रनवे का एज है. यहां से कुछ 200 मीटर इधर पे इस एंटीना को लगाया जाता है. अब टचडाउन जोन है मतलब लैंडिंग यहां से हो रही है. तो लोकलाइजर एंटीना यहां पर था, ग्लाइड स्लोप की एंटीना यहां पर है, एंड इट इज ट्रांसमिटिंग बीम्स हियर. ओके, ग्रेट. एवरीवन अंडरस्टूड वेयर इज द ग्लाइड स्लोप एंटीनास प्लेसमेंट. और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जैसे लोकलाइजर का काम था हॉरिजॉन्टल गाइडेंस देना, ग्लाइड स्लोप एंटीना का काम है वर्टिकल गाइडेंस देना. ओके, कूल. अब ये जो वर्टिकल गाइडेंस देता है, कैसे देता है? कहीं ना कहीं से तो शुरू होगा ना. इसका कोई रेफरेंस तो होगा. जैसे लोकलाइजर जो रेफरेंस दे रहा था वो सेंटर लाइन थी. यहाँ पर क्या रेफरेंस होगी? यहाँ पर क्या रेफरेंस होगी? कुछ तो रेफरेंस होनी चाहिए. चलो वो रेफरेंस बताता हूँ. The vertical reference is a slope.
The vertical reference is a slope. Let's say this is my runway. Let's say this is my runway. मेरे को टच डाउन कहाँ करना? यहाँ पे करना है ना, यहाँ पे तो नहीं करूंगा। जहाँ पे रनवे का एंड है यहाँ से आ रहा हूँ मैं, यहीं पे थोड़ी ना टच डाउन यहाँ पे चुम्मी दे दूंगा रनवे को, नहीं ना, आगे जाके थोड़ा टच डाउन करूंगा। सो the glide slope that I make or the instrument actually throws starts from the touchdown zone, the aiming point, and at an angle of 3 degrees. At an angle of 3 degrees. This is the reference. This is the reference. And this glide slope, also known as the standard glide slope. Standard glide slope 3 degrees का glide slope होता है, right? And ये glide slope की क्या खासियत होती है? ये इसको कहते हैं हम लोग threshold. इसको हम लोग कहते हैं threshold, the end of the runway. This crosses the threshold at a height of 50 feet by default. Every time you come in for a landing throughout your entire life, everyone remember this. Whenever you come in for a landing, आपका जहाज यहाँ पर हो रहा है, उड़ रहा है, and he is coming in for a landing, you are supposed to be over the threshold at 50 feet. You are supposed to be overhead the threshold at 50 feet. Kushi, Anushka, you both are flyers, you will know this. Correct? हमेशा आपको यही बोला जाता है. If you are not at 50 feet, you might screw up your landing a little bit too much. Okay? So this is my vertical reference. अब इस vertical reference को मैं जहाज को कैसे इंडिकेट करूं, जैसे लोकलाइजर करता है वैसे ही करता हूं. आ जाओ इसकी वर्किंग समझते हैं. Working principle is the same. The short form is DDM, difference in depth of modulation, just like the localizer. How does it work? We have a glide slope antenna placed on the side of the runway, kind of like this. And this antenna is transmitting 2 lobes. This antenna is transmitting 2 lobes. One lobe below the glide path. He is transmitting one lobe below the glide path. And the other lobe that he is transmitting above the glide path. And ये जो दो उसने lobes transmit किए हैं, ये दोनों lobes कहाँ intersect करते हैं? At the correct glide path. So they are intersecting on the correct glide path. The upper lobe in this case is modulated by a 90 hertz signal. The lower lobe in this case is modulated by a 150 hertz signal. Upper lobe is known as the yellow sector. 90 is always yellow and 150 is always blue sector. Real life में इनके कोई colors नहीं होते हैं. Real life में इनके कोई colors नहीं होते हैं. इन्हें हम लोग बस diagrammatic representation के लिए ऐसे दिखाया जाता है. Okay? सिंपल सी बात है. डायरेक्शनल एंटीना एक डायरेक्शन में वेव्स थ्रो कर रहा है, एंड यहाँ पर जो इसने कैरियर वेव है, इसकी जो कैरियर वेव, वो कैरियर वेव क्या रहेगी? 329.15 ही रहेगी. लेकिन जो उसने उसमें मॉड्यूलेशन डाला है, जो इंफॉर्मेशन डाली है, दैट इज इन 90 हर्ट्ज. राइट? श्रीराम, अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? पक्की बात? अंडरस्टूड एवरीवन? So now, even though this antenna is on one side of the runway, even though this antenna, now you guys will tell me, sir, how does this actually work? Because the antenna is placed on the side of the runway. It is not placed on the runway जो वो सीधी lobes ऊपर फेंक पाए, right? You might have this doubt. तो इसका आंसर ये है कि ये mathematically जो lobes होती है ना, इनको correct कर दिया जाता है. They have been mathematically corrected for. The beams have been mathematically corrected for, so as to give you a proper signal indication. Okay? Works. बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बीच वाले पोर्शन को we call it the equisignal. The middle portion we call it the equisignal. Now, how does this work? Let's say if there is an aircraft that is coming over here,
and he's flying a little bit high. I cannot see anything. I just know I want to come to the runway. I cannot see anything outside. What will the radio do? The receiver do? The receiver will sense the indication, and he will measure the difference in depth of modulation. He will measure, am I receiving more of the 90 hertz modulation and less of 150 hertz? Or he can sense, am I receiving more of the 150 hertz modulation and less of the 90 hertz modulation? If I'm receiving more of the 90 hertz modulation, that means I'm high. If I'm receiving more of 150 hertz, that means I'm low. If I'm receiving equal amounts of modulation, equal depth of modulation, that means I'm bang on the glide path. If I am receiving equal amount, that means there is no difference. My deviation will be 0. I am on the path. TDF, difference in depth of modulation, will be 0. अगर मैं ऊपर हूँ, there will exist a difference in modulation depth. अगर मैं below हूँ, there will be a difference in modulation depth. Understood? Any doubts? Now, again, what are the indications shown to the pilot? The indications shown to the pilot are on a CDI, and this CDI will have 2 needles. Again, this and this. Now, as we have seen, the horizontal one is used for the localizer. Here we will be studying about the vertical one. So why do I call it the vertical one? Yeah, this is a horizontal line, yes, but it moves vertically, right? So let's say this is the center. Again, we have 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. VOR mein full scale deflection was how much? 10 degrees. ILS localizer mein full scale deflection was how much? 2.5 degrees. यहाँ पर कितना है? Full scale deflection is 0.7 degrees. That means 1 dot is equal to 0.14 degrees. Such a small value. Imagine you can land at a runway where the indications that are shown to you are this accurate. They are down accurate to a 1/10 of a degree. That's how accurate your signals are. So if the indication is showing you this, how many degrees are you below the glide slope? Come on, tell me. Kushi. Kushi, can you hear me? I said, tell me, how many degrees am I below on the glide slope? Anushka? Sir, 0.196. 0.196. How did you get this value, Khushi? 0.3. 0. Point, Khushi, how did you come across this value? sorry, sir. Sir, 2.5 dots here. Sir, 0.35. पहले क्या गलती हुई थी? सॉरी सर, मैंने कुछ गलत कर दिया था. अरे ठीक है, क्या गलती हुई थी? Everyone can learn from it. सर आई थिंक मैंने सर वो 0.14 को आधा कर दिया था, मतलब Okay. 0.14 को आपने आधा कर दिया. हाँ, वो माय मिस्टेक सर. 0.14 is for 1 dot, okay? Yeah. कैसे देखना है? This is called half scale deviation. This is called half scale deviation.
ओके, अब माय वर्टिकल क्लियरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. माय वर्टिकल क्लियरेंस, कैन यू सी मी और नॉट सी मी? मेरे को बताओ, मेरा पाम दिख रहा है अभी? नहीं दिख रहा नहीं है? दिख रहा. How do you read? Now pin this screen. Good audio, no problems. Sound is also found. So इस चीज को बोलते हैं मैक्सिमम सेफ डेविएशन बिलो द ग्लाइड स्लोप. क्वेश्चन आएगा आप लोगों के यहाँ पे, व्हाट इज द below the glide slope? So you will say max safe is half scale or 0.35 degrees below, या फिर half scale or 0.35 degrees fly up. If I am getting this indication, that means I am at my maximum safe deviation. मतलब क्या है? देखो, ये मतलब नहीं है कि आप सेफ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेफ हो, इसका मतलब कि इससे ज्यादा जाओगे तो बैंड बच जाएगी. दिस इज द मैक्सिमम डाउन यू कैन गो एंड स्टिल बी सेफ. ये वो कहना चाह रहे हैं. अगर let's say this is the glide slope that you have to follow and your aircraft is below the glide slope and your aircraft is below the glide slope, what will happen to the d bar? The d bar will keep on going up and up and up and up and up. अब भाई देखो, विच वन इज मोर सेफ? भाई ऊपर चले जाओ ठीक है, नीचे नहीं जाना चाहिए भाई. नीचे धरती है, पहाड़ हो सकता है, खेत खलियान हो सकते हैं, कोई टावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. आयुष, व्हाट आर यू Yeah, डूइंग? nothing. My screen was getting messed up. Fixing it up. ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो अभी अगर आपका एयरक्राफ्ट नीचे है तो आपको बोलेगा भाई ऊपर जा. अगर आप ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं, बोलेगा नीचे जा कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर मैं नीचे हूं, आई हैव अ प्रॉब्लम. व्हाई? टेरेन. अकॉर्डिंग टू लॉ, I should not be more than half glide slope below this. If I'm below this half glide slope, what should I do? I should cancel the approach and I should go around immediately. Do you guys know what is a go around? Do you guys know what is a go around? Harsh, Akash, Farhad, do you know what is a go around? What is a go around? बताओ यार ऐसे. कुछ टेक्निकल इशू, विंड से फिर ग्लाइड स्कोप की वजह से अगर लैंडिंग नहीं होती है तो फिर से अटेम्प्ट करने के लिए बोलते हैं. हाँ अग्री, फिर से अटेम्प्ट करने के लिए बोलते हैं, बट गो अराउंड है क्या? फिर से फिर से attempt लैंडिंग मतलब? पोजीशन पे आना घूम के. नहीं, वापस आने को अप्रोच कहते हैं. Go around is the process of breaking an approach, adding full power and climbing. This is called go around. बस go around यहीं तक है. इसके बाद जो आप प्रोसीजर करते हो, ये लेफ्ट राइट, वो अप डाउन लेफ्ट राइट, दैट इज कॉल्ड द मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर. वो हर एरोड्रोम का अलग होता है, वो चार्ट्स वार्ट्स में लिखा रहता है. आपको उसकी मैप मिलेगी कि हाँ, अगर आपने गो अराउंड किया, आपको यहाँ से लेफ्ट लेना, राइट लेना, अप लेना, डाउन लेना, एवरीथिंग इज रिटन. बट व्हाट इज गो अराउंड? यहाँ से बस पावर ऐड करके क्लाइंब एस्टैब्लिश करना ही गो अराउंड कहलाता है. ठीक है, वापस आने को अप्रोच कहते हैं. If you fuck up the approach, if you fuck up the landing,
You can always go around. What is going around? Power लो, पूरी पावर डाल दो, जहाज का नाक लो, ऊपर कर दो और क्लाइंब करो. Aircraft is safe in air, not in ground. The aircraft is meant to be in the air. The closer you are to the ground, the major it is chance for you to crash. Controlled flight into terrain remains still the one of the biggest cause for aircraft accidents. ठीक है? Any doubts? No doubts? अब आते हैं, सैचुरेशन आई है. ब्रेक चाहिए किसी को? नहीं आई है ना सैचुरेशन? ठीक है, we'll complete glide slopes. अब धोखा भी करते हैं लोग. ये जो ग्लाइड स्लोप है ना, ये भी हमारे साथ धोखा करती है. और ये धोखा करने का कारण पता है क्या है? धरती. The glide slopes do not give us correct indications all the time. Just as I told you, you have a localizer. These are the two localizer beams. The localizer beams, they can have side bands, side lobes. And these side lobes can hamper a lot of television signals and radio signals and FM signals. इसका क्वेश्चन आएगा. Listen out to my words. Listen out to my words. इसका क्वेश्चन आएगा. These side lobes, they affect television bands, radio bands. These lobes, they interfere television bands. लिख लो, क्वेश्चन आएगा. हर्ष लिखेगा नहीं, लेकिन बोल दिया क्वेश्चन आएगा, लिखेगा नहीं, फिर बोलेगा भैया क्लास में कराया नहीं. सीधा सीधी बता दे रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है. Won't write it down. अब ये इंटरफेरेंस कम हो तो क्या किया जाए? ऑल कम्युनिकेशन थिंग्स आर वर्टिकली पोलराइज. इसको हॉरिजॉन्टली पोलराइज क्यों किया गया है? सो दैट दे डू नॉट इंटरफेयर विद अदर नेविगेशन एड्स. दैट इज हाउ इट इज डिफरेंशिएटेड. ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे कीथ में. क्या मैं समझा नहीं. Polarization, electrical field is oscillating in the horizontal plane only or in the vertical plane only. अगर आप ऑल इंडिया रेडियो देखो, ये सब देखो, एफएम रेडियो देखो, आपका जो गाड़ी से जो आपका एंटीना निकलता है वो भी तो वर्टिकल होता है ना, साइडवेज तो नहीं निकलता. तो उसको इंटरफेयर, अगर मैं चाहता हूँ मेरा नाविड उन सारी चीज़ों से इंटरफेयर ना करे, तो मैंने क्या किया, मैंने नेविगेशन वाले एंटेनास को हॉरिजॉन्टल रखा. अच्छा, तो वो लोग अभी हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट करेंगे, जिसकी वजह से वो इंटरफेयर विद द अदर will never cause problems to a vertically oscillating wave. Okay, got it. Cool. Now, similarly, these side lobes are causing us a problem. Localizer has to have some problems. Side lobes are one of those problems. Okay. Similarly, glide slope will also cause us problems. And glide slope, instead, we have a 3-degree glide slope. We have 3-degree glide slope. You can also have this, and you can also have this. Because of the ground below, because of the dharti, because of the ground below, you have a lot of reflections of these two lobes. This slope is formed by making lobes, right? So these lobes suffer from reflection from the ground, and they make another set of reflected lobes. Make another set of reflected lobes. This is the correct glide path. This is the correct glide path, the glide slope at 3 degrees angle. But they make a false glide slope at 6 degrees, at 9 degrees, twice or thrice the times of the glide slope angle. So my aircraft can also, now he to wouldn't know na ki which glide slope is true. He will only think, okay, I am getting zero difference in depth of modulation.
everything is good. So this is another two set of lobes. This is another two set of lobes. Okay, why are these lobes coming? Because of reflections. Because of reflections. Okay. Now, if my aircraft is over here, and if my aircraft is not over here, he ended up a little bit high on the approach. He ended up उसकी altitude approach बनाने के time पे, landing करने के time पे जब वो आ रहा था, his altitude was a little too high, and instead of intercepting this correct glide slope, he intercepted the false glide slope. So will this give me absolutely correct indications? No. And secondly, this is very, very dangerous for the aircraft. This is very, very dangerous for the aircraft. Why is it very dangerous for the aircraft? I'll explain it to you right away. आप लोगों ने 1 and 60 रूल किया हुआ है. आप लोगों ने 1 and 60 रूल किया हुआ है. आपने 1 and 60 रूल में ये किया होगा to maintain a 3-degree glide slope. To maintain a 3-degree glide slope with X amount of ground speed, you need a certain rate of descent, right? For a certain ground speed, you need a certain rate of descent. We have all done this. कैसे निकालते हैं हम लोग? कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं. बाय सिंपल चीज है. ग्राउंड स्पीड जो भी है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको रेट ऑफ डिसेंट मिल जाएगा. सीधी बात है ना? सीधी बात है ना? चलो, आई विल एक्सप्लेन यू समथिंग वेरी नाइस. आप लोगों ने 160 रूल फॉर्मूला तो कर दिया. आप देखो कॉन्सेप्ट. मियाँ, अगर तुम्हारी ग्राउंड स्पीड इतनी है, वेक्टर बना रहा हूं मैं, तो तुम्हारा रेट ऑफ डिसेंट इतना होना चाहिए. इफ योर ग्राउंड स्पीड इज लेस, योर रेट ऑफ डिसेंट शुड बी लेस. बट इफ योर ग्राउंड स्पीड इज मोर एंड इफ यू कीप द सेम रेट ऑफ डिसेंट, मतलब आप आगे ज्यादा जा रहे हो, यू आर गोइंग अहेड मोर एंड यू आर कमिंग डाउन लेस. सो टेल मी समथिंग, विल यू बी एबल टू फ्लाई एट 3-degree glide slope? Will you be able to fly a 3-degree glide slope like this? No, you will be flying a shallower glide slope. So, इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है? इससे हम लोगों को ये सीख मिलती है कि अगर if I am increasing my ground speed, I should also increase my rate of descent. Correct? Correct? Yes. And this is for 3 degrees. You want to know the problem? The problem is the false glide slope will be at 6 degrees. The false glide slope will be at 6 degrees. And for the same ground speed, I will need a higher rate of descent, a double rate of descent. Angle double हो गया ना? Angle double हो गया ना? Rate of descent required ज़्यादा है. Now tell me something, I'm coming in for a landing. Do I want to land with a very less rate of descent or very, very high rate of descent? I want to land with a low rate of descent, na? So an A320 aircraft lands with about 750 feet per minute of rate of descent. A typical Cessna does it at 350. The multi-engine aircraft that you will fly will be at 450 to 500 rate of descent. Now imagine doubling it. 1500 feet per minute rate of descent. Within 1 minute, you're falling 1500 feet. Within 1 minute, you're falling from the 150th floor of a building and coming down. Understand? It's way too much. It's way too much. Cool. So this is a problem. Secondly, there is something in my aircraft, and you will be studying this in instruments, in ground proximity warning system, GPWS. Terrain, pull up. Terrain ahead, pull up. Whoop, whoop, pull up. सुना होगा आपने ये, है ना? तो ये चीज क्या है? इसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम. ग्राउंड, जमीन की प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस की वो वार्निंग देता है. ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम कैसे देता है? अगर वो देखेगा if your rate of descent is very, very high, then he will see, okay, yeah, you are about to dive into the ground. He will tell you terrain, pull up, whoop, whoop, pull up, sink rate. These are the indications that will come.
And when, if you are flying an aircraft for an airline and GPWS warning comes and it is your fault, then you will get a call from Delhi head office for a cup of coffee to discuss your revised salary structure. Okay, so it is not a very good thing. Any doubts? So pilots should always intercept the correct glide slope. How do you understand it is the incorrect glide slope? Rate of descent डबल हो जाएगा, आपका ऑल्टीट्यूड भी डबल हो जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट, आसानी से समझ आ जाएगा कि हाँ, what is the correct thing to do when you have intercepted the correct glide slope? What is the correct thing to do? If you see Maintain any, the rate of descent. sorry, I was saying if you intercept the right glide slope, then you should maintain the correct rate of descent so that Exactly. you'll be in the correct approach path. right, but what if you have intercepted the false glide slope? Now what are you supposed to do? Then Now you tell me, correct if your you have rate of intercepted the descent. false glide slope, can you come over here and intercept this and then go here? No, Why? only possible. I am very far away from the ground. Why can't I do this? But runway तो आगे है ना, मतलब आप ऑलमोस्ट रनवे के पास आ जाएगा तो आपका ये बहुत चल मैं दूर हूँ, जाएगा. अब बता. हाँ, if you're far away from the runway, then that No, then you that's still not a can't. problem. Why? Because you will still, आप 6 पे हो, आपको 3 पे आना है, आप वैसे ही 6 तो ज्यादा वाला रेट ऑफ डिसेंट देगा. अब 3 पे आने के लिए तुमको और रेट ऑफ डिसेंट बढ़ाना पड़ेगा. देखो ये वाला एंगल और ज्यादा स्टीप है. What is the Point. best? Go around. Okay. ठीक है. भाई इसमें अप्रोच time बना lapse रहे हो, का खुशी हो रही है, गो अराउंड. छींक आ रहा है, गो अराउंड. ठीक है. If at any given point of time you think a safe landing cannot be made, go around. If at any given point of time you see that the landing will have a lot of problems, it will have a lot of complications, you think you want a retry, go around. Go around for pilots is a no penalty action. आपका हर एक्शन क्वेश्चन किया जाएगा, गो अराउंड कभी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा. You can never be penalized for going around. And going around, my friends, is the safest course of action. 90% of the aircraft accidents, not 90, 80% of the aircraft accidents happen during takeoffs and landings. You know this, right? Tire फट जाना, engine में birds घुस जाना. Majority of the accidents happen close to the ground. And the majority of the accidents happen during landing. 50%, something like that, happen during landing. Takeoff landing मिला दोगे तो they form 80% of the accidents. So landing के time पे major problem होता है unstable approach. If you have an unstable approach, if your speed is too high, if your altitude is too high, if there is too much turbulence, you cannot control the aircraft, go around. Okay? कोई आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकता. If a pilot has gone around, that means everyone knows that going around was the safest course of action. You can always make another approach. Remember this. You will be flying passengers. 200 जाने आपके पीछे होंगी. हर लैंडिंग में आपके पैसेंजर्स आपको जज करते हैं आजकल. गालियां देके जाते हैं अगर घटिया लैंडिंग करके जाते हो. तो ठोक बजा के जाना है एयरक्राफ्ट को या एक सेफ लैंडिंग करनी है या डरा देना है अम्यूजमेंट पार्क की राइड देके. Go around. Cool. Similarly, just like the ILS, this will also have a monitoring station. This will also have a monitoring station. अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो glide path वगैरह होता है ना, all of these glide path, everything is there ना, they can not only expressed in degrees, they can also be expressed as percentage. Do you know this? Do you know this? In-flight navigation हुआ है अभी? नहीं हुआ है. Top of descent, top of climb calculation नहीं हुआ. ठीक है.
तो ये 3 degrees को I can also express as a percentage. Let's say I am climbing in this angle. So this is my climb angle 3 degrees. This can also be told that okay, I am climbing at 5.2%. मतलब क्या? For every 100% है ना, percent is percent, century, cent. For every 100 units I go ahead, I go 5.2 units up. Matlab, if I'm going 100 feet ahead, I'm going 5.2 feet up. If I'm going 100 meters ahead, I'm going 5.2 meters up. If I'm going 100 nautical miles ahead, I'm going 5.2 nautical miles up. ओके, इसको परसेंट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. आपको ये परसेंटेज कहाँ से मिलेगा? परसेंटेज कैसे मिलेगा मेरे को? मेरे पास अगर एंगल है, क्या मैं परसेंट निकाल सकता हूँ? हाउ? व्हाट इज दिस परसेंट? This is percent is nothing but perpendicular by base. What is perpendicular by base? Do tan 3 degrees in your calculator. Do it. You will get an answer 0.005. You'll get this answer. Correct? अब इसको मेरे को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, तो ये डेसिमल पॉइंट उठाओ एंड 1 2 5.24%. Tan of whatever angle multiplied by this. So a 3-degree glide slope, a 3-degree glide slope is also called a 5.2% glide slope. Okay. Any doubts? Acha. Now monitoring station. The monitoring station of the glide slope is very, very strict. You know how strict it is? Glide slope is 3 degrees. इसका 7.5% निकालो, कितना होता है? हाँ, 0.225 degrees. 1 second. There's some noise now. So अगर आपका ग्लाइड स्लोप का एंगल, अगर आपका ग्लाइड स्लोप का एंगल इस वैल्यू से चेंज हुआ, इतने डिग्री से अप डाउन हुआ, मॉनिटरिंग स्टेशन विल शट इट डाउन. अगर पावर फेलियर, पावर 50% से ज्यादा गिरी, इफ द पावर रिड्यूसेस बाय 50%, we'll call it off. We'll call it off. Okay. This is what the monitoring station does. Lastly, talking about the DOC. Are you sure you cannot hear any background noise? None, zero. Okay. So, talking about the coverage area. Now remember, it is very important that you know this coverage area, because you might always get confused with localizing. Okay. Glide slope, just make a note, glide slope coverage area. Very commonly asked question. Very commonly asked question. The glide slope coverage area is 8 degrees either side. This is the center line, 8 degrees here, 8 degrees here, up to a distance of
10 nautical miles. Up to a distance of 10 nautical miles. Always 8 degrees 10 miles. 8 degrees 10 miles glide slope. 8 degrees 10 miles glide slope. Very commonly asked question, very repetitive question. Okay, glide slopes, lateral coverage. Now we are going to talk about glide slopes, vertical coverage. What was localizer's vertical coverage? Tell me. So minus 1 degree to plus 7 degree. Okay, so it was fixed, right? Here it is not fixed, it's variable. It's variable. Let's say this is my runway and this is my glide slope. My standard glide slope is 3 degrees. अगर मान लो यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल वगैरह होता है, कोई रनवे के अप्रोच पे कुछ अप्रोच वगैरह होता है, तो आई कैन ऑल्सो समटाइम्स इंक्रीज द एंगल. I can make it maybe 4 degrees, 3.5 degrees, right? For example, London Heathrow Airport, it has a very steep glide slope. Kathmandu, it has a very steep glide slope. Paro, Bhutan, it has a very steep glide slope. Okay, it has a very steep descent path. Sometimes, because of terrain or because of other things, you might have a very steep path. There can be glide slopes up 3 degrees. यहाँ मेरे पास तो एंटीना है ना, मैं कोई भी I can point it at any direction. I can keep the slope at any given angle. Okay, it's not fixed, but the center line is fixed. So here it's variable. Let's say if this angle is theta, 3 degrees ही पकड़ लो, but अभी variable है. Because it is variable, we'll call it theta. So the coverage area extends from a fraction of the theta, which is 0.45 theta, up till above also. What is this angle? Is 1.75 theta. Matlab, this glide slope that is there, this glide slope lobes that you're getting, the glide slope lobes and coverage will be, let's say if this is 3 degrees, let's say if this is 3 degrees, this coverage area is at 3 degrees, the center is at 3 degrees. I am assuring you a coverage of, ये वाला angle कितना होगा? इसका 45% like है ना? So this will be 1.35 degrees. If you do it in the calculator, you'll find this value. 3 multiplied by this value will be this angle. मैं क्या बता रहा हूँ हर्ष? मैं बता रहा हूँ अगर मेरा ये कवरेज, ये मेरा ग्लाइड स्लोप है, तो मुझे इसके ऊपर कितना तक कवरेज मिलेगा, इसके नीचे कितना तक कवरेज मिलेगा, एंगल. ठीक है, अगर मेरा ये थीटा एंगल है, अगर मेरा यहाँ पर ये थीटा एंगल है, मुझे 1.75 थीटा ऊपर तक कवरेज मिलेगा एंड 0.45 थीटा नीचे तक कवरेज मिलेगा. ये वैल्यूज 1.75 एंड 0.45 याद करनी है, इंपॉर्टेंट है. तो आपसे अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द वर्टिकल कवरेज एरिया फॉर अ 3.5 डिग्री ग्लाइड स्लोप, आप निकाल पाओगे? व्हाट इज द वर्टिकल कवरेज एरिया फॉर अ 3.5 डिग्री ग्लाइड स्लोप? निकालो. ये वर्टिकल वाला पॉइंट एक बार फिर से समझा तो. हाँ भाई, ये आपका एंगल है, ये आपका ग्लाइड स्लोप का एंगल है, राइट? हर एक चीज की डेजिग्नेटेड ऑपरेशनल कवरेज होती है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ग्लाइड पाथ का इस वर्टिकल कवरेज बता रहा हूँ. वर्टिकल कवरेज, नाउ दिस वर्टिकल कवरेज, हॉरिजॉन्टल कवरेज किसके अराउंड सेंटर थी? सेंटर लाइन के नीचे सेंटर थी. हम लोगों ने बोला सेंटर लाइन से इतना डिग्री इधर, सेंटर लाइन से इतना डिग्री इधर. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अगर ये मेरा एंगल है, ये एंगल का 1.75 टाइम्स ऊपर और ये एंगल का 0.45 टाइम्स नीचे तक,
ये मेरी कवरेज एरिया हो गई। तो जो भी मेरा ये वाला एंगल हुआ, मैंने इसको क्या किया, 1.75 से मल्टीप्लाई किया, मुझे अपर लिमिट मिल गई। मैंने इस एंगल को क्या किया, 0.45 से मल्टीप्लाई किया, मेरे को लोअर लिमिट मिल गई। सो फ्रॉम द अपर लिमिट टू दिस लोअर लिमिट आई हैव द कवरेज एरिया। एवरीवन अंडरस्टूड? आकाश, यस तो इसकी वर्टिकल लिमिट्स बता दो मेरे को कवरेज एरिया की। 0.45 नीचे की और ऊपर की 1.75। नहीं, 0.45 थीटा लिखा है, मतलब जो आपका सेंट्रल का एंगल है, फिक्स्ड नहीं है भाई, इस एंगल का 0.45, समझा? ओके, थीटा 0.45 मल्टीप्लाई बाय थीटा। 0.5। ठीक है, एक बार लिख लें। अनुष्का समझ आई बात? बताओ मेरे को फिर आंसर। Sir, lower is 1.57 and the upper is 6.1. 1 point Sir, lower is 1.57 and upper is 6.1. ओके, तो मतलब होराइजन से या ग्राउंड लेवल से ये वाला एंगल 1.57 डिग्रीज हुआ, और यहां से ये वाला एंगल कितना हुआ, 6.1 टू समथिंग, Yes, 6.1. ठीक है? इतना डिग्रीज फॉर 3.5 डिग्रीज, ठीक है? जो भी एंगल मिलेगा उसको 1.75 करना, जो भी एंगल मिलेगा उसको 0.45 करना, आपको वर्टिकल लिमिट्स मिल जाएंगे। नो डाउट्स इन लाइक स्लोप्स? समझ आ गया? टेक अ ब्रेक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। सो वापस जाते हैं हम लोग यहाँ पे आईएलएस में। लोकलाइजर खत्म, ग्लाइड स्लोप खत्म, अब आते हैं हम लोग मार्कर बीकन्स पे। अब आते हैं हम लोग मार्कर बीकन्स पे। दिस इज द लास्ट थिंग अबाउट आईएलएस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। उसके बाद अप्रोच लाइटिंग सिस्टम एक ऐसे नल्ला सा पार्ट है, फालतू सा। उसके बाद हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग थिंग, एरर्स थोड़ा पढ़ लेंगे, कैटेगरीज पढ़ लेंगे, एंड वील एंड इट। ओके, आज सिर्फ मार्कर बीकन्स होगा। Tomorrow I'll finish off the chapter and we'll do numericals and questions, everything. Expect an NDB test today. Okay, let's start. मार्कर बीकन, हम लोगों ने एनडीबी देखा था, वो क्या था, वो भी एक बीकन था जो सिर्फ और सिर्फ कैरियर वेव फेंक रहा है, फेंक रहा है, फेंक रहा है, फेंक रहा है, फेंक रहा है। सिमिलरली ये भी एक बीकन है। कैसे टाइप के बीकन्स हैं ये? ऐसे बीकन्स हैं, these are those types of beacons. Let's say this is the runway, this is the side view, this is the top view, this is the approach path, this is the glide path. Okay, what do we do? हम लोग यहाँ पे बीकन डाल देते हैं, एक बीकन, दूसरा बीकन और तीसरा बीकन। सिमिलरली यहाँ पे एक बीकन, दूसरा बीकन, तीसरा बीकन। मार्कर बीकन हम लोगों को क्यों चाहिए होते हैं? सबसे पहले तो आप लोग लिखो इसकी फ्रीक्वेंसी। दी कैरियर फ्रीक्वेंसी और द ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी इसकी है 75 मेगाहर्ट्ज। इसकी है 75 मेगाहर्ट्ज। ओके, एंड हाउ मेनी बीकन्स आर देयर?
there are 3 beacons, and where are these 3 beacons? These 3 beacons are along the runway's approach path, on the center line, on the center line. यहाँ पे ये center line के ऊपर है, center line के ऊपर है, right along the center line. Basically if this is the runway, this is the glide path, एक सीधा इसके नीचे approach path है, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे. Okay, and what do? They transmit a beam upwards. They transmit a beam upwards. Okay, they will transmit a beam upwards. What kind of a beam is it? It is a fan shaped beam. Okay, beam की भी characteristics होती है, beam की भी shape होती है. What kind of a beam does it transmit? A fan shaped beam, a fan beam. Okay, cool. And they are placed at specific distances away. For example, ये जो सबसे दूर वाला है ना, ये जो सबसे दूर वाला है ना, इसको हम लोग कहते हैं आउटर मार्कर, आउटर मार्कर beacon, outer marker beacon. This is called the middle marker beacon. This is the inner marker beacon. आउटर वाला सबसे दूर है, मिडिल वाला बीच में, इनर वाला पास में, राइट? अब ये हमें क्या बताता है? दिस टेल्स मी माय डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रेशोल्ड. दिस टेल्स मी माय डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रेशोल्ड. एज आई टोल्ड यू ओवर हियर, एक मुझे लेटरल गाइडेंस देगा, एक मुझे वर्टिकल गाइडेंस देगा, दूसरा मेरे को डिस्टेंस देगा, दूसरा मेरे को डिस्टेंस देगा, राइट? क्या से बताता है? लेट्स से आई हैव एन एयरक्राफ्ट व्हिच इज फ्लाइंग ओवर हियर and he comes and he intercepts this beam, he gets this beam, he will hear a tone, he will hear a sound, and he will see some indications, and okay, now he will know, okay, if I receive this set of indications, agar meko ye cheez receive hui, that means I am at about 3.5 to 6 nautical miles range from the threshold. Now I take my aircraft again, I take my aircraft again, and now he's flying. As he is coming in closer, he will now come through the middle marker beacon. When he listens to those indications, when he sees those indications, he will know that, okay, now I am at middle marker, which means I am 1 nautical mile away. भैया Yes. ये डायग्राम वापस और एक बार समझा दो ना, नहीं समझ में आया. मैं देखिए तेरा रनवे है, ये तेरा रनवे, ठीक है, मैं देख रहा हूँ यहाँ से तेरी अप्रोच पाथ शुरू हो गई. अब मेरे को पता करना है कि यार मैं इस थ्रेशोल्ड से कितना दूर हूँ, है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने सारे सरकार को, ब्रह्मांड को बता दिया, यार देख, अगर तूने एक आउटर मार्कर रखा हुआ है तो एक ऊपर बीम डालेगा और तू ऐसे आ रहा है, अगर तू उस बीम के अंदर से घुस के आया तो देखो कुछ इंडिकेशंस मिलेंगी. वो इंडिकेशंस क्या बाद में देखेंगे, अलग अलग है सबके लिए, ठीक है? अगर मेरे को वो इंडिकेशन मिली, मैंने सुना, मेरे पायलट को पता चल जाएगा, भाई ये तू 6 नॉटिकल माइल दूर है, ठीक है? अब आप अप्रोच के लिए आ रहे हो, यहाँ पे बीच में एक और बीकन, मिडिल बीकन, ऊपर एक बीम डाल रहा है, तुम बीम के ऊपर से जाओगे, तुमको चीजें सुनाई देंगी, दिखेंगी, कुछ इंडिकेशंस दिखेंगे, वो अलग थोड़े इंडिकेशंस है. अगर तुमको इंडिकेशंस देखे तब समझ जाओगे, ओके मैं मिडिल मार्कर पे हूँ, मैं 1 नॉटिकल माइल अवे हूँ, 1 नॉटिकल माइल अवे. अगर मैं मिडिल मार्कर पे आया, मैंने कुछ चीजें सुनी, दैट मींस आई एम दिस मच अवे. तो बाय सीइंग दोस इंडिकेशंस कैन आई नो मैं कितना दूर हूँ? पायलट को डिस्टेंस का अंदाजा हो रहा है. और यही है भाई मार्कर बीकन, इतना ही है, ठीक है? अब ये जो बीम है वो कौन से फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर रही है? 75 मेगाहर्ट्ज. और रही बात इस डायग्राम की, तो आपका मिडिल मार्कर, ये देखो,
आप सिर्फ इसको देखो, इसको भूल जाओ, इसके नीचे का जो भी है ना, ये लाइन के नीचे का जो भी है सब भूल जाओ, ये लाइन के नीचे का जो भी है सब भूल जाओ, आप यहां से देखो। इसमें कोई कंफ्यूजन है? यहां पे कोई कंफ्यूजन है? नहीं भैया समझिए। अब यही चीज को मैंने टॉप डाउन व्यू से सिखाया ये वाले पार्ट में, ये वाला। अब सिर्फ इसके नीचे का पार्ट देखो, अब सिर्फ इसके नीचे का पार्ट देखो। गॉट इट, क्लियर। गॉट इट? अंडरस्टूड? हाँ। चलो अब इसकी इंडिकेशंस हम लोग समझते हैं, अब इसकी इंडिकेशंस हम लोग समझते हैं। गो टू पेज नंबर 56। गो टू पेज नंबर 56। जब आप आउटर मार्कर पे रहते हो, आउटर मार्कर पे, हाँ बता भाई आकाश। और इनर का डिस्टेंस नहीं बताया आपने। मिनर का ले लो जी, 75 मीटर्स टू 450 मीटर्स, ठीक है। तो यही तीनों चीजों के लिए अभी मैं एक चार्ट बनाने वाला हूं, एंड ये चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू मेमोराइज दिस, ठीक है। फ्यूचर में भी काम आएगा, इंटरव्यूज वगैरह में भी जाएगा ये, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग डिस्कस करते हैं आउटर मार्कर, मिडिल मार्कर, इनर मार्कर। अब what are these are beacons. What is the carrier wave frequency? What is the carrier wave frequency? The carrier wave frequency in all of them is 75 megahertz, है ना? That means it works on what band? VHF band. Okay. अब ये पता है कैसा टाइप का सिग्नल होता है, इसका एमिशन डेजिग्नेटर लिख लो। इसका एमिशन डेजिग्नेटर है A2A। A2A मतलब क्या? आपने एनडीबी किया था, यू हैड डन एनडीबीज। श्रीराम, वीडियोस ऑन प्लीज। So how are NDVs? NDVs, they used to transmit a continuous carrier wave and they used to put an ident, right? They used to put an ident. हर्ष समझ आ रहा है? वंदना समझ आ रहा है? तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, ये जो बीकन है ना, ये भी एक कैरियर वेव पे रेडिएट कर रही है, लेकिन कुछ इंडिकेशंस देगी। वो इंडिकेशंस क्या देगा? वो इंडिकेशंस देगा सिग्नल, जैसे उसमें आइडेंट आ जाता है, उसका आइडेंट आ जाता है, उसका मॉर्स कोड आइडेंटिफायर आ जाता है, इनका भी अपना खुद का आइडेंट है। इनका आइडेंट क्या है? आउटर मार्कर इज 2 डॉट्स, सॉरी 2 डैशेस, मतलब उसके मॉर्स कोड में डैश डैश डैश, ठीक है। उसका मॉर्स कोड और उसका सिग्नल कुछ ऐसा लगेगा। 1 सेकंड में उसको 2 बार डैश सुनाई देगा, टीप 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 टीप, ठीक है। एंड ये जो डैश उसने उसमें मॉड्यूलेट करके डाली, इंफॉर्मेशन डाली, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी ना, मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। सो दैट मॉड्यूलेटिंग वेव फ्रीक्वेंसी is 400 hertz. तो is this a low pitch sound or a high pitch sound? It's a low pitch sound. फ्रीक्वेंसी कम होती है तो पिच कम हो जाती है, राइट? फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो पिच कम हो जाती है। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नो, राइट? ग्रेट। अब जैसे जैसे मैं अंदर आते जाऊंगा, जैसे जैसे मैं अंदर आते जाऊंगा, ये so it's like, you know, coming to the climax of something. The more closer you get, the more closer you get, वो साउंड की वो धक 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 बढ़ती जाएगी। We have all witnessed those sounds. To make a scene more dramatic, they put sound effects, right? Similarly over here, the more closer you get, the more things will get. Cool? So now you have come a little bit closer. The indication that you will hear will be dots and dashes. Dots and dashes. So a dot and a dash, and a dot and a dash, and a dot and a dash. It's also called alternating dots and dashes. Alternating dots and dashes. Dots and dashes. How many? 3 times per second. Beep, 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 beep. So it's a
इट्स दैट. बट ये लो पिच नहीं रहेगा, ये थोड़ा मीडियम पिच में आ जाएगा. इसकी मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाएगी. 1300 हर्ट्स, ओनली हर्ट्स, नॉट मेगा हर्ट्स, ओनली हर्ट्स. क्योंकि ये हमारी ऑडिबल रेंज है ना. दिस इज आवर ऑडिबल रेंज. वी हैव टू लिसन टू दिस. वी हैव टू लिसन टू दिस. जैसे इसमें यहाँ पे इसकी ये फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पे इसकी ये मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी है. जहाँ पे ये दो डैशेस मॉड्यूलेट करता था, यहाँ पे 3 dots and dashes in a second modulate करता है. Now that you are coming very very close, this will become even more tuck 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 6 dots per second, and this will be on a frequency of 3000 hertz. This is the modulating waves frequency. As you can see, this is a low pitch, this is a medium pitch, and this is a high pitch sound. Okay, this is a high pitch sound. So ये तो हो गए. We only spoke about audio. We get audio plus visual indications. We get audio plus visual indications. So what is the visual indications that we are getting? The color or the indication, color of indicator. White. प्लीज नेवर राइट येलो ओवर हियर. यहाँ पर बहुत लोग बच्चे बोलते हैं यहाँ पर येलो लिख के आ जाते हैं. इट्स एम्बर. एविएशन में येलो एग्जिस्ट नहीं करता. आज ही अपने कान में ये बात डाल के रख लो. मैंने बहुत लेट सीखी थी. एविएशन में येलो करके कुछ नहीं होता, एम्बर होता है. ठीक है, याद रखना. देयर इज नथिंग येलो इन एविएशन. इट्स ऑलवेज एम्बर. एंड ये होगा ब्लू. ओके, एंड इसकी डिस्टेंसेस क्या होती हैं? चलो इतना लिख ही लिया, डिस्टेंसेस भी लिख ही लो. इसका डिस्टेंस क्या है? 0.75 मीटर्स टू 450 मीटर्स के बीच में कहीं पे भी लगाया जा सकता है. 1 नॉटिकल माइल पे लगाया जाता है ये. एंड ये लगाया जाएगा 3.5 to 6 नॉटिकल माइल्स तक. ओके, चलो इसकी एक वीडियो देख लेते हैं. दिस चार्ट इज ऑल्सो देयर. दिस चार्ट इज ऑल्सो देयर इन पेज 56 ऑफ योर TR रेडियो नेविगेशन नोट्स. Look at this, huh? So you have a runway over here. Localizer array, matlab localizer antenna, an array of antennas. Computer science people will understand this. This is an array of antennas. A tuck 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 tuck. Line में बहुत सारे मैंने antenna लगा दिए. It's an array. ठीक है? They are sending the beams over here. Okay? इनकी इंडिकेटर यहाँ पे गलत है. आउटर मार्कर ब्लू होता है, इनर मार्कर ब्लू होता है. लेट मी चेक. Outer is blue. आउटर इज ब्लू. ओके, सॉरी, या आउटर इज ब्लू. मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत डायग्राम बना दिया है गाइस.
प्लीज यहाँ पे करेक्ट कर लेना, इट्स अ ह्यूमन एरर. Take this, put it over here. Take this, put it over here. Okay. सोचो अगर मैं इस टाइम पे गलती कर सकता हूँ, आपसे भी हो सकती होगी, राइट? मैं अगर गलती कर पा रहा हूँ इसमें, तो ह्यूमन आपसे भी हो सकता है, राइट? यू डोंट बी दिस पर्सन. ओके. So now we are going to also hear the indications today. So आपको लोकलाइजर एंटीना मिलते, देखो ग्लाइड स्लोप आ रहे एंटीना यहाँ पे, ठीक है? टचडाउन जोन से थोड़ा बाजू में, टचडाउन जोन से थोड़ा बाजू में, रनवे एज से 200 मीटर, ये दोनों बीम डाल रही है. जो आपको ब्लू ये दिख रहा है ब्लू वाला, ये आपकी ब्लू है. अब यहाँ पे आपकी इनर मार्कर बीकन, थोड़ा और दूर जाओगे, आउट मिडिल मार्कर बीकन, थोड़ा और दूर जाओगे, आउटर मार्कर बीकन, और यहाँ पीछे आपका छोटा सा जहाज आ रहा है. इसी टाइप की बीम को, शेप को हम लोग कहते हैं फैन शेप्ड बीम. So now we have the aircraft which is flying. You can see the CDI needle going up and down. So it is showing you a fly right indication and you are on the correct glide path. Okay. This is how the outer marker, inner marker and middle marker indications look. The outer marker is a blue bulb. तो ब्लू मैंने लिखा दिया, मतलब क्या भाई? ब्लू कलर का एक बल्ब होगा, वो जलेगा. किस हिसाब से जलेगा? आउटर मार्कर इज 2 dashes, तो इट विल ग्लो like a dash, a long bright light. Okay. But how will a dot? Tick tick tick. एक डॉट वैसे होगा. ओके. यहाँ पे आपको वर्टिकल, यहाँ पे पोजीशन भी दिखा दे रहे हैं कि मिडिल मार्कर एंड मार्कर कितना है. आप बस इन दोनों को देखना, इंडिकेशंस आपको देखने. ओके. एंड लिसन टू इट. जा रहा है. अब देखो, एयरक्राफ्ट इज बीइंग टोल्ड टू you, how will you correct for your approach? You will fly up and you will fly to the right. Okay. Listen, be ready. There's no audio. Is there supposed to be audio? See. बत्ती जल रही है, आउटर वाली बत्ती जल रही थी, वापस देखो. डैश 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 डैश. 2 dashes in 1 second. Dash 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 dash. सबका खाना इधर ही खाऊंगा, इधर ही खाऊंगा. कंटिन्यूस क्लास. Dot dash dot dash dot dash dot dash dot dash, right? And this light will glow accordingly. So when in my cockpit I hear this in my headsets, I will know that I am 1 nautical mile away.